Welcome to my YouTube channel. So, how are you guys? So today we will be discussing about dynamic programming. So आज की इस वीडियो में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे कि डीपी के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. सो बेसिकली क्या होता है, कोई भी इंटरव्यूज में चले जाओ आप, अगर टॉप कंपनीज के इंटरव्यूज हैं तो उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग या डीपी के प्रॉब्लम्स पूछे ही पूछे जाते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी डीपी के प्रॉब्लम्स होते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, फिर उनके एग्जांपल्स देखेंगे कुछ. और इस वीडियो को हम थ्योरेटिकल ही रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, कोड लिखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का और समझेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं डीपी के प्रॉब्लम्स. ओके. सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीपी. ओके, सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, एक मेथड है. इट इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज्ड इन मैथमेटिक्स एज वेल एज कंप्यूटर साइंस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स. ओके. तो क्या होता है, एक बड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमारे पास, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके सॉल्व करना, दैट्स कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग. मीन्स बेसिकली एक बड़े प्रॉब्लम को हम ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में, और फिर उसके ऊपर अप्रोच करेंगे और फिर उसको हम रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो बेसिकली बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एट द एंड वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So by solving each sub-problem only once and storing the results, so we will solve each sub-problems and will store the results, and we will use those results to solve the bigger problem. Okay, so that's what dynamic programming is. Okay, so dynamic programming basically क्या है, एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उनके रिजल्ट्स को स्टोर करके एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो बार बार कैलकुलेशंस होते हैं ना, अगेन एंड अगेन जो कैलकुलेशंस होते हैं, सपोज करो कि तुम्हें कोई एक सोल्यूशन एक सोल्यूशन निकालना है, और उसके लिए तुम्हें सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी. ओके, सोल्यूशन बी. अब सपोज करो सोल्यूशन बी तक पहुंचने के लिए यू हैव टू सॉल्व सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन सी. तो क्या है कि सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें दो सॉल्यूशंस को यूज करना होगा, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी. और सोल्यूशन बी को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन ए और सोल्यूशन सी का जरूरत पड़ेगा. तो बेसिकली क्या है, वी आर कैलकुलेटिंग टू टाइम्स सोल्यूशन ए. सो टू टाइम्स कैलकुलेट करने से अच्छा है हम एक टाइम कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है उसको हम स्टोर कर लेंगे बेसिकली, और नेक्स्ट टाइम हम यूज करेंगे, ना कि हम कैलकुलेट करेंगे. तो अगेन कैलकुलेट करने से अच्छा है कि हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे. दैट्स कॉल्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग. ओके. सो बेसिकली रिडंडेंसी जो है, रिडंडेंसी उसको अवॉइड करता है हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग. ओके. रिडंडेंसी मीन्स इन कॉम्पिटिशंस, कंप्यूट करने में. एंड बेसिकली इट विल ऑब्वियसली efficient program, it will be efficient program. Okay. And so let's start with dynamic programming. Let's understand, let's go into more depth of dynamic programming. Okay. So let me show you one example of dynamic programming. So we all are aware about the Fibonacci series. Okay. Fibonacci series के बारे में हम जानते हैं. So let us try to write that Fibonacci series. Okay. So this is basically 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 and 13 and continue. So basically Fibonacci series is the next element will be sum of previous two elements. Okay, previous two elements, and it will start with 0 and 1. So 0 and 1 will be A and B will be 0 and 1. Okay. Now the next element will be the sum of A plus B, then it will be like, again it will be sum of the previous two elements, again it will be sum of the previous two elements.
So how we can use dynamic programming for solving Fibonacci series, we will discuss it later. Now, let us first understand what is the brute force approach. Brute force approach for solving Fibonacci series. So basically what we will do to find nth Fibonacci number. Okay, suppose f of nth Fibonacci number, we will simply add Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2. Okay, so that would work, but it would be inefficient for large values of n. Suppose n is very large, then definitely it will cause issue. Means basically we will use recursion. Okay, recursion to solve the problem. To solve the problem. But again, f of n minus 1, f of n minus 2, this will be like, if we will look with respect to time complexity, it will be, it's not a good approach. Okay, तो suppose for example, अब हम इसको देखते हैं. Suppose करो कि फिबोनाची सीरीज फिफ्थ एलिमेंट का निकालना है. ओके, so Fibonacci of fifth will be Fibonacci of fourth and Fibonacci of 3. Okay, 4 will be Fibonacci of 3, Fibonacci of 2. 3 will be Fibonacci of 2 and Fibonacci of 1. Okay, 3 will be again Fibonacci of 2, f of 1. It will be f of 1, f of 0, f of 1, f of 0, f of 0. So this one we know it will be 1 equal to 1, this one equal to 0, this one equal to 0. But can you see it? Suppose this f of 3, how many times we are calculating? 2 times f of 3, f of 2, 1, 2, 3. 3 times we are calculating f of 2. So again and again we are computing the same results. Okay, so now it's clear that why we need dynamic programming. Dynamic programming. To avoid these things again and again, computing the same results again and again, why we can't use the results that is already computed. So in that case we will use dynamic programming. Okay, now let us see how Fibonacci series can be solved using dynamic programming. So Fibo using dynamic programming. Okay, so now we have sub problems like f of 0, f of 1, f of 3, f of 4, and so on. Now we will store the results. Store results or solution. So basically we will create a table. In this case we can create an array. Simply we can create an array. Okay. So we will create an array and we will store it. Suppose f of 0. What is the value of f of 0? It's 0. F of 1. It's 1. Whenever we calculate first time f of 2, whenever we calculate, we will use 0 plus 1, that is 1. Okay, 1. Now f of 3 is basically what? F of 2 plus f of 1. So f of 2 we already calculated 1 and f of 1 we already calculated as 1. So we will simply use 2 and we will put here. We will not calculate f of 2 again and f of 1 again. Okay, so this is like building up the solution. And it will, we can say it will avoid density also. Okay, so for each sub problems. So basically we can conclude that
by using dynamic programming, we can effectively calculate the Fibonacci series without recomputations. Without recomputations. Okay, so that's done. Let me erase this. Okay, so now we got to know about this. So next is when to use dynamic programming. Okay, when we should use dynamic programming, in which scenarios we should use dynamic programming. So first point is optimal substructure. Optimal substructure. It means like when we combine the results, when we combine the results of optimal results, when we combine the results of subproblems. Okay, results of subproblems means optimal results of subproblems to achieve the optimal result of big problem. So basically, if big problem is there, so we will combine the small problems and all will be optimal solutions. Okay, so that's the case. Second one is overlapping subproblems. Means we will how to identify that it can be solved using dynamic problem. So if we for example, in case of Fibonacci series, we have to recalculate some sub problems again and again. So the same sub problems are solved repeatedly in different parts. Then we will use or overlapping sub problems. Okay. So example is Fibonacci series. There are many other examples of this. So we to optimize dynamic sorry to understand where to use dynamic programming, we must see the optimal substructure and the overlapping subproblem. In case of optimal substructure, like we can have one problem like finding the minimum cost path from source node to destination node. Okay, that can be another example of optimal substructure. So this is how you can understand where to use dynamic programming, in which solutions we will use the dynamic programming. Now let us come to approaches of dynamic programming. So basically we have one term that is widely used in dynamic programming is memoization. Okay, and the second one is tabulation. So memoization is like it will start basically what will happen, it will start with the final solution and it will break down. Memoization is like breaking down into smaller sub problems. Breaking down into smaller sub problems. Okay, and then storing the results and using that storing results and using that to solve the big problem.
And this is used whenever the sub problems are like we have large number of sub problems, then we can use memoization. And its another name is top down approach. Top down approach. In case of tabulation, this is called as bottom up approach. While solving problem, by seeing the problem we can understand which approach should be fine. In the second case it's tabulation approach. So in the tabulation approach, it will start with the smallest sub problem. Okay, it will start with the smallest sub problem and gradually builds up the final solution. Means it will start from here to then this. Okay, suppose like this. So something like this, and it will combine to one solution. So it will start from bottom and it will reach to the top, build the bigger solution. So basically it's like filling a table. There are many problems that comes under this category and this category. Okay, so now let us go through the common algorithms that use dynamic programming approach. Some common algorithms use DP. Common algorithm first is LCS. This is the very standard problem. So longest common subsequence. Okay, so it is basically the longest common subsequence between two strings. Okay, two strings. Then next problem is shortest path in a graph. Like finding the shortest path between two nodes in a graph. And we have knapsack problem. Knapsack problem can also be solved using dynamic programming, as well as we have greedy approaches and all for these kinds of problems. So knapsack problem is also fine. Basically it will determine the maximum value of item that can be placed in a knapsack. There is a bag and the maximum value of item that can be placed inside this bag. So that's a knapsack problem. Then we have matrix chain multiplication, again one very standard problem. Matrix chain multiplication, very standard DP problem. So it will optimize the order of matrix multiplication to minimize the number of operations, basically to minimize the number of operations in a matrix multiplication. And at the last we can say Fibonacci series is the perfect example. Fibonacci sequence. Now let us go to the next part, that is advantages of DP. Okay, advantages of dynamic programming. What are the advantages of dynamic programming? Why we should use it? So basically, as I told you earlier, they पहले ही बता दिया था, it will avoids recomputations. Like same problem will not be recomputed again and again, and it's basically like time saving. Complexity will reduce. And the next is it will ensure optimal solution. And also we can say it's like breakdown of complex problem into simple problems, into simple manageable problems. Sub problems. Okay,
So these are the advantages of dynamic program. And where dynamic programming is used, basically it is used in like basically optimization problems. In optimization problems, we use dynamic programming. Also in like string matching and all, so we use their dynamic programming. For scheduling and all, we use dynamic programming. Resource allocation in OS operating system, resource allocation, we use dynamic programming. Okay, so these all are the information related to dynamic programming. In the next video, we will discuss more about dynamic programming, and basically the next video will be more towards the practical approach. So नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं प्रैक्टिकली करके हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जैसे कि दो तीन प्रॉब्लम्स के मैं नाम लिख देता हूँ कौन कौन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फिबोनाची नंबर्स वाला है, फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। एंड कैटेलन नंबर भी होता है एक प्रॉब्लम, कैटेलन नंबर, ये इजी प्रॉब्लम्स में की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इजी प्रॉब्लम्स। और मीडियम लेवल प्रॉब्लम में हम 0 1 नैपसैक देख सकते हैं, नैपसैक प्रॉब्लम। और बहुत सारे फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम, ये भी एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है, इसको भी देख सकते हैं, एल्गोरिदम, ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है। और भी है, पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस हो गए या फिर हमारे वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग, दीज ऑल आर दी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। और हार्ड प्रॉब्लम्स में अगर देखें तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन हो गया। और वर्ड रैप प्रॉब्लम, ये भी बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड रैप प्रॉब्लम। एंड और भी मैक्सिमम सम रेक्टेंगल, ये एक प्रॉब्लम है बहुत सही 2D मैट्रिक्स का, वो चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। ओके, सो थैंक यू गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे करके। सो अभी के लिए बाय।